Namaskar दोस्तों. In today's video, we are going to review two companies. So the earnings of these two companies are in public right now. So both these companies gave extraordinary results, and we'll go through the earnings of these two companies and try to understand that the results, the performance which they gave in Q1 FY27, is this sustainable for at least the next 1 year. So if the profitability expands, then the stock price will see appreciation. So these are fairly famous, fairly recognized companies. So if the profitability expands, then the stock price will appreciate. If the profitability does not expand, then obviously the stock price will not appreciate, right? So we'll start with the first company. The first company is Groww. Groww is a broking company or a wealth management company. It's a very famous company. It got very recently listed. तो इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखो year on year, it grew by 94%. I mean 94% is great net profit. Sales grew by 66% and EBITDA grew by 101%. तो 100% growth EBITDA में दिखी है, राइट? तो ग्रो के बिजनेस मॉडल को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा. इसका पी जो है वो 75 का पी, तो वन वुड सी दिस पी टू बी अ वेरी हाई पी, बट मैं थोड़ा why the market has given this company a P of 75, 80 something, which I'll touch upon, right? So if you look at Groww, 80% of the business still comes from brokerage. The broking business से 80% top line आता है, but the broking business, which is nothing but equity derivatives, it's a volume driven business. तो ये company brokerage business से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रही है, and there are 4 new avenues that this company has got into, right? एक तो सबसे पहले commodity derivatives है, जिसमें 30% market share है. So this is one new avenue that this company has caught on to really well. तो एक चीज़ ये है. Second thing is MTF, margin trading. So this is a very sustainable way of growing your business. तो काफ़ी सस्टेन तरीके से जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आता है, and करीबन 3,800 crore is something which it earned from the MTF vertical, which is really great, right? The third thing this company is doing is loan against services. So for example, if you're holding securities, loan against services बोल दिया मैंने, loan against securities. So if you're, तो करीबन 2.25 crore लोग enrolled है. I mean, the user base is 2.25 crore. So in the past, when the company was not listed, it spent a lot of cash to acquire these customers. And once you have this base of 2.25 crore on your app, then you can just cross-sell them whatever you want. So loan against services, मतलब if you're holding mutual funds, or if you're holding securities or stocks, then you could get loan against those securities. So that is this lending vertical is what the company is going to scale in the future. Plus बाकी जो जैसे AMCs है या फिर जो है ना बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की तरह ये कंपनी भी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनने की कोशिश कर रही है. तो PMS, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो एडवाइजरीज वगैरह जो है वो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है. एंड all these businesses, or most of the businesses, the 4 initiatives that I spoke about, इसमें से बहुत सारे initiatives जो है बहुत एक incubatory stage में है. तो the market, frankly speaking, does not know how to value them. So the market is valuing this company on predominantly 2 things. One is कि इसका user base जो है 2.25 CR का जो user base है, it's a huge user base, and इस user base को बहुत चीज़ें cross sell कर सकती है over a period of time ये company. So this is one thing. Second thing is most of the businesses or the new initiatives that this company has started, ये काफ़ी incubatory stage में है. तो management ने, इस Groww के management ने अभी तक कोई guidance वगैरह भी नहीं दिया है. तो दिस इज़ अ हाईली अंडरपेनिट्रेटेड काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री. फाइनेंशियलाइजेशन का जो थीम 2020 से शुरू हुआ है वो मुझे लगता है कि बहुत वक्त तक चलेगा. एंड स्पेशली इफ़ यू लुक एट द वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर, HNI, अल्ट्रा HNI, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है. लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ जो है, आई थिंक इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद द मसल पावर दैट ग्रो हैज़, ग्रो कैन डू इट, स्केल दिस बिजनेस एट अ वेरी फास्ट पेस इन द फ्यूचर. तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है फ्यूचर में, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है. दैट्स वाई द यूज़र बेस प्लस द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट दिस कंपनी हैज़ टेकन, दैट्स वाई द मार्केट हैज़ गिवन इट अ पी ऑफ मोर देन 70. तो ग्रोथ जो है एक क्लियर कट गाइड, दिस इज़ लाइक ग्रोथ इन्वेस्टिंग, राइट? काफ़ी नैरेटिव इसमें इन्वॉल्व रहेगा, बट पीपल हु आर ग्रोथ इन्वेस्टर्स शुड लुक एट ग्रो वेरी पॉजिटिवली. दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट ग्रो, एंड दीज आर नॉट स्टॉक recommendations, by the way. You please, this is just a level 1 analysis. You can read the
transcripts of this company and do a level 2 analysis for yourself. By the way, company का जो stock price है, it appreciated by 5% when the results were out. The results were very strong and the future prospects as well look very strong, though no guidance was given for this company. So the next company that we analyze is Bank of Maharashtra. So Bank of Maharashtra came up with its results as well, and the results look good on the face of it. तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो जब भी आप बैंक्स को एनालाइज करते हो, देयर आर 4 पैरामीटर्स, एटलीस्ट देयर आर 4 पैरामीटर्स व्हिच आई यूज टू analyze and understand banks, right? The first one is credit growth. So credit growth is nothing but your loan book कितने से grow हो रहा है, या what is your advances growth, what is the growth in your loan book, कितने लोगों को लोन दिया है, क्या वैल्यू पे, क्या yield पे लोन दिया है. That is very important. So advances growth or credit growth is one parameter. The second parameter is deposit growth. So banking is a commoditized business. आपको सस्ते से सस्ते में कैपिटल उठाना है और सस्ते से सस्ते में लोन देना है, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी महंगा कर देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा भी ज़्यादा रख देते हो, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आके आपका मार्केट शेयर ले. द रियल thing of importance over here is at what cost of funding are you, what is the cost of funding of your business, as simple as that. कितने में पैसा उठा रहे हो, मतलब जो कासा फ्रेंचाइज है वो कितना ग्रो कर रहा है या डी ग्रो कर रहा है. आप जो टर्म डिपॉजिट्स, मतलब जो एफडीज़ पे कितने, जब आपके बैंक में या ब्रांचेस में लोग एफडीज़ बनाने आते हैं तो आप कितना डिपॉजिट का कॉस्ट देते हो. आई मीन एट व्हाट rate do you kind of take that money and give them interest. तो वो सारी चीज़ें deposit growth में matter करती है, right? The third thing is asset quality, right? You're kind of distributing money to people. I mean, I hope, or we hope that you're recovering that money and you're recovering that with the right interest. तो लोगों को बांटा जा रहा है पैसा, तो recover करना भी बैंक का ही काम है. This is the third thing. And the fourth thing is cost to income, which is the operating cost of running business. So any business that you run, there is a certain operating cost that you have to incur. तो banking का भी एक operating cost होता है. तो वो operating cost बढ़ रहा है, कम हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोन्स को अंडरराइट किया जा रहा है, या अभी भी मैन्युअली ही सब कुछ किया जा रहा है. रिटेल लोन्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट लोन्स दे रहे हैं. कितना बड़ा सेल्स टीम है ना. रिकवरी के लिए कितना बड़ा टीम रख रहे हैं. रिकवरी कहाँ होती है, फील्ड पे होती है या ऑफिस में होती है. तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट टू इनकम में आती है. मैन पावर वगैरह, ऑफिस, ब्रांचेस, ये सब कॉस्ट टू इनकम में आती है, राइट? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, if we have to kind of understand this company on these 4 parameters. So if you look at the advances growth se pehle, the guidance which was given for advances was like 18%, but the company overshot on advances growth because the growth came out to be 27%. तो मतलब guidance 18% का दिया था, outperform कर दिया खुद के guidance को. 27% का advances growth आया. So growth point of view से phenomenal result, right? Now let's look at the loan book and where did this growth come from, right? तो क्या होता है, अगर आप PSU बैंक स्टडी करोगे तो उसमें एक सेगमेंट होता है रैम, रिटेल एग्रीकल्चर MSME, राइट? आप चाहे फिर बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए या फिर कैनेडा बैंक, इफ यू लुक एट, और एनी ऑफ द PSU बैंक्स, इंडियन बैंक्स, ओवरसीज बैंक, राइट? सो द रैम पोर्टफोलियो फॉर दिस बैंक, रिटेल, agri, MSME is 60% and the corporate portfolio is around 40%, right? So corporate portfolio, right, that is what saw a lot of growth in the last quarter to year on year, right? तो corporate loan book जब grow करते हैं तो the yields at which corporate loans are given, the yields are lower, right? तो अगर yields lower का मतलब है कि आपका net interest margin जो है वो compress करेगा, right? That is what has happened over here. So एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 27% का लोन बुक ग्रोथ है, बट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस्ड ओवर ईयर बिकॉज द लोन बुक इज़ बिकमिंग मोर बैलेंस्ड. पहले एकदम रिटेल था, अभी धीरे धीरे करके उसको कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है, थोड़ा बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स जो होते हैं at least on the face of it, obviously yields कम होते हैं और थोड़ा safe माने जाते हैं. तो asset quality improves if you have corporate loans. तो corporate loans saw 30% growth year on year. That is one very important thing. दूसरे जो 2 segments है which saw growth, one is pretty obvious. एक तो gold loans है, it grew by 75%, and other is MSME loans. तो government ने ईरान वॉर के बाद और US का जो टैरिफ वगैरह आया था उसके बाद MSMEs को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले. तो the banks are kind of using those schemes and they are all पूरा फायर के साथ पूरा MSMEs को lend कर रहे हैं, right? तो
corporate loan book का growth was very sharp, and gold loans and MSME loans also saw a serious uptick. But because of the corporate loans going up, the net interest margin contracted a bit, compressed a bit. So this is not just one reason for the net interest margin to compress. The other reason for the net interest margin to compress very slightly is the cost of funding, right? So क्या होता है कि the cost of funding that this bank did, मतलब बहुत cost of funding improve हुआ है, कुछ ऐसा worsen नहीं हुआ है. But the problem looks very evident because the way at which the growth at which deposits grew was just 13%. तो मतलब advances grew by 27% and deposits grew by 13%. तो कैसे चलता है, मतलब बैंक्स में मैं समझा देता हूँ कि let's say 100 रुपीज़ के डिपॉजिट्स मिले, राइट? बैंक का बिजनेस क्या है, मतलब डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं 100 रुपीज़ के, मुझे डिपॉजिट्स मिले. अब वो 100 रुपीज़ में से डिपॉजिट्स में से सबसे पहले तो 4 रुपीज़ आई कीप असाइड फॉर CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI मैंडेट करता है. देयर इज नो इंटरेस्ट दैट द बैंक अर्न्स ऑन दिस, दिस. तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म मल्टीपल टाइम्स. तो 4 रुपये या 4 rupees I have to set aside for cash reserve ratio. Then another 17 rupees I have to buy GSEC bonds. So again, this is mandated by RBI that all banks have to 17% of whatever deposits that they get, उसको GSEC bonds जो होते हैं, हमारे जो bonds होते हैं, government bonds होते हैं, that is what they have to buy, right? अब इसके बाद जो भी पैसा बच गया उसमें से मान लीजिए आप एक 15% या 18% आप यूज़ कर सकते हो, या और एक 15-18 रुपये आप साइड में रख लीजिए आपका ओपेक्स कॉस्ट, कि आपको ब्रांच चलाना है, मैन पावर हायर करना है, राइट? एंड देन फाइनली आफ्टर deducting these 3 cost centers, OPEX, GSECs and CRR, let's say आपके हाथ में 60 रुपीज़ रहते हैं, and that is what forms your advances growth. मतलब वो 60 रुपीज़ में आपको डिसाइड करना है कि अभी मुझे लेंड करना है 60 रुपीज़, all guns blazing. तो 100 रुपीज़ आपने लिए हैं डिपॉजिट से या डिपॉजिटर से, FD वाले से 100 रुपीज़ लिए, या फिर जो कासा फ्रेंचाइजी खुलता है या सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे खुलता है, 100 रुपीज़ यू हैव टेकन, and out of those 100 rupees, almost 40 rupees is something which has been, kept aside, which has not been lent. So 60 rupees is what gets lent. तो अगर deposit growth 13% से हुआ है और advances growth double 27% से हुआ है, तो ये ऊपर का पैसा कहाँ से आया है? तो ऊपर का पैसा बैंक ने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट से बोरोइंग मार्केट से उठाया. तो ना इंटर बैंक फैसिलिटीज़ होते हैं, आई मीन बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम बॉन्ड मार्केट्स मतलब प्राइवेट बॉन्ड मार्केट्स, मतलब प्राइवेट बॉन्ड मार्केट्स, राइट? एक दूसरे से इंटर लेंडिंग या इंटर बैंकिंग रेट्स होते हैं. दिस इज लाइक expensive money. This is borrowings, right? The fact that the bank is not able to sustain its loan book growth with its own deposits, it has to go to the money market, which is not a great thing for a bank. तो कहीं ना कहीं when the results of this bank came out, asset quality वगैरह एकदम phenomenal है, credit cost वगैरह सब कुछ सही है, gross NPA, थोड़े slippages दिखे हैं, but ठीक है, वो कोई structural नहीं है, वो एक चलता रहता है, banking business में slippages होते हैं, right? तो but the problem is with deposit growth. तो आप जैसे मैंने बताया 100 रुपीज़ के आप डिपॉजिट्स ले रहे हैं, जिसमें से आप सिर्फ 60 रुपीज़ लैंड कर सकते हैं. यहाँ पे आपका एडवांसेस ग्रोथ 27% है, बट आपका डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 13% है. तो भाई बाहर का दूसरा मतलब इतना पैसा लाओगे कहाँ देने के लिए? तो वही बोरोइंग्स दे आर डूइंग एट अ वेरी हाई रेट. सो दैट्स वाई what the company guidance that the company has given is that we want to rationalize our future growth. So this company grew last year, FY26 mein the advances growth was 22% and deposit growth was 14%. So the guidance which this company has given is ki FY27 ke liye we want to grow at 18% credit growth. So 27% se niche aake 18% is what we're looking at, and 14% deposit growth aa jaye to अच्छा होगा. So this is what the guidance the management has given. तो इसके बाद ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस एक मिक्स्ड रिएक्शन था. तो कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि दिस इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज द कंपनी हैज़ गिवन ग्रेट रिजल्ट्स, बट देयर आर सर्टन काइंड ऑफ एनालिस्ट्स व्हिच आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन दिस बैंक. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. टेक केयर. बाय बाय.